गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 हरि ओम। Let there be peace, let there be peace and love amongst all the human beings of the universe. Let there be peace. Om Shanti, Shanti, Shanti. We have started the contemplation on the chapter number 20, that is contemplation of the self. इन्फिनिट के बारे में विचार धारणा करना। इन्फिनिट के बारे में कोई भी विचार धारणा कर नहीं सकता है, बट कोई तो भी अपने को सोच चाहिए. वी हैव टू हैव सम बेस. वी कांट टॉक अबाउट द इन्फिनिटी बिकॉज इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी. यू कैन नॉट टॉक. बट द सेल्फ or a pure consciousness has to be understood only by understanding. उसका संकेत कर सकते हैं. For example, we can't talk about the gold. We can talk about the ornaments made of the gold. We cannot talk about the ocean. We can talk about the ocean through the waves and water. So likewise, उपाधि के थ्रू ही अपन जिसकी उपाधि रहित सत्ता है उसके बारे में बात कर सकते हैं. जिसकी सत्ता सामान्य सत्ता है उसके बारे में बात नहीं कर सकते. वी कांट टॉक अबाउट द इन्फिनिटी. इसलिए भगवान रामकृष्ण परमहंस बोलते थे की ब्रह्म झूठा हुआ नहीं है, ते उष्ट झालेले नाही. यू कैन नॉट टेस्ट इट, यू कैन ओनली अंडरस्टैंड इट बाय द फीलिंग. ओनली समझदारी जीवन में लाना बहुत जरूरी है. लाइकवाइज वी हैव सीन द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज ब्रह्म कारणम, where Vashishtha Rishi is very nicely said, I am only the Brahman, Supreme Spirit, not divided by the time space. Likewise, so I am tranquil, pure consciousness and imperishable. But what happens is, because of my feeling that in the relative world I am the doer, and then the whole sansar starts. Adnyan is the incompleteness of the knowledge, and Adnyan is not the absence of knowledge. This we have seen. Then we have started with AVIDYA VIBHAGam, the division of spiritual ignorance. And how this spiritual ignorance comes, that we are trying to understand. Now we are going to shloka number 14, page number 206, chapter number 20. Morkhe pindastavaradi tamasavadigata tatra manastvam apraptyam manastvadapi cha uttamam. An object like a mountain, which is the mass of stupidity, has gone to the limit of quality of tamas, that is darkness, ignorance and inertia, where the state free from the mind is not obtained. It has also fallen from the state of thinking mind. तो क्या बोला इन्होंने? तमसी वृत्ति कौन सी है? तामस वृत्ति यानी डार्कनेस, इग्नोरेंस, इनर्शिया, पड़े है, कुछ कर नहीं रहे, यही भगवान है, भगवान होगा, असल हरित देईल मला खाटल्यावरी. इफ गॉड इज देयर, he will give me everything on my bed. That's what the people feel, but that is not truth. मेहनत करना पड़ेगा, बगैर मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा. योग वशिष्ठ में एक जगह बहुत सुंदर आता है कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड कैन बी अचीव्ड बाय स्पेशल एफर्ट्स. मेहनत करना पड़ेगा, बगैर मेहनत के कुछ भी नहीं मिलेगा. तो ये स्टुपिडिटी अपने को छोड़ देना पड़ेगा. कौन सी स्टुपिडिटी है? ये तमस जो अपने में भरा हुआ है, पूरा पूरा ऐसी बॉटल में ठूस ठूस के भरा रहता है, वैसे तमस भरा हुआ है, डार्कनेस, इग्नोरेंस और इनर्शिया. तो इसको निकालेंगे कैसे? ओनली बाय अंडरस्टैंडिंग. पर अभी यहाँ क्या हो गया? तमस आ गया तो उसका सोचने की भी शक्ति खत्म हो गई. सो दिस इज सच अ बैड स्टेट. पर्सन फील्स, तामसिक पर्सन फील्स कि ही इज वेरी स्पिरिचुअल मैन. ही डजंट डू एनीथिंग. ही विल सिट एट वन प्लेस and think that I am meditating, but he is actually sleeping. So he is in tamas. So this tamas is most dangerous. And so how to overcome this? Know that for a certain that this world is a dream. In such manner will wise person will continue through the body. वो सब कुछ करेगा, experience miseries, but he will not become miserable. Since it is expressing sense of otherness, then the misery will begin. Moment he has sense of otherness, misery will begin. But if we take the life in totality, उसको पूरा टोटलिटी में देते, life is full of joy. It is a wisdom. This is wisdom. It is the subtler body suffering
and not the consciousness. वो जीवा जो रहेगा, जिसको फीलिंग है अदर देन दी सेल्फ, अदर देर इज ए ड्यूलिटी, तो वो सफर होता है. श्लोका नंबर 15. सुप्त पूर्यष्टका यत्र चित्तस्थिता दुःखदायिनी मुकान्धर जड़वतम तत्र सत्ता मात्रेण तिष्ठति. Where the consciousness remains asleep with its eightfold body, that is five subtle element, mind, intellect and ego, it is the giver of sorrow. जब consciousness पे विचार नहीं होता तो it is a giver of sorrow. It remains there merely as existence, like a dumb, blind and dull person. The note is there, the five tanamatras or sense perception, that is sound, touch, form, taste and smell, together with the internal instrument, that is thinking mind, determinative intellect and faculty that create the sense of I, doership, constitute the body, as it were, of the conscious spirit, where it sleeps. When consciousness awakes or is freed from this limitation, it shines in its own splendor. जब ये उसमें से मुक्त होता है तो it doesn't go dull, it becomes very efficient. So we have to take this world more in a totality, and then only you will enjoy the life. Simply remaining as existence is not equal to liberation. So is it like that? There is a that the wise man will not have any feeling like cold, hunger, thirst. Is it so? Is this a liberation? That's what now Rama is asking in the shloka number 16. Sri Rama Vacha Satta Matrena Sansthanam Mukte Sannihitam Kalu. Is not firmly abiding as mere existence close to liberation? No way. So all the stones or bricks would have been liberated by now, and we are unnecessarily struggling. When we listen to something, misunderstanding is always possible. This is because of the inability to comprehend. समझदारी नहीं है जीवन में, इसलिए ऐसा परेशानी होती. And this misunderstanding leads to further complication. उससे और further complications होते. तो फिर कैसा जीना है लाइफ में? Remain mere pure consciousness existence. For stone there is neither bondage nor liberation, but for us there is a meaning because we are expressing through the limitations, yet not getting influenced by the limitations, and that is called as liberation. यानी अपने को जगत का अपने पे प्रभाव हो रहा है और उसका अपने पे miserable situation आती है, joyful situation आती है, but we don't become miserable or joyful because of that situation, because we know that we are Paramatma, we are divine, we are self, we are undivided fragmented consciousness. When Paramatma expresses through these limitations of Prakriti, there is a phenomenon called as Jivana. Life is produced, and life has a sufferings or sorrows or a joys. So wise man has understood that he is a common substratum supporting all complementary opposites, joy और sorrow. वाइज आदमी को समझ गया, वही जॉयफुल सिचुएशन को सपोर्ट करता है, वही सॉरोफुल सिचुएशन को सपोर्ट करता है. सो वी हैव टू रिकॉग्नाइज दिस अगेन एंड अगेन. ये बार बार क्यों करना पड़ रहा है? 20 चैप्टर हो गए क्योंकि बार बार अपन गलत धारणा करके बैठे हैं. इतने जन्मों 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 जन्म गलत धारणा करके रखे, कभी नेचर के साथ रहे नहीं, नेचर के अपोजिट ही काम किया है. जो कुछ करना है सब विध्वंसक ही काम किया है, क्योंकि ये रिलेटिव जगत में अपने को फंस के रहने की इच्छा रहती. सो व्हाट हैज टू बी डन नाउ? Wise men understand that we are a common substratum supporting all complementary opposites, joy, sorrow. We have to recognize this again and again, and that is liberation. This is only the liberation. Liberation does not mean things will change outside around us. We have to change. अपने को बदलना है. This both expression is a liberation. तो बड़ा सुंदर कहा गया है हिंदी पिक्चर का, थोड़े गम है थोड़ी खुशी है, ये तो जीवन है. You will have some sorrow, some joys. That is a life. Sometimes we may get according to our choice. Sometimes we do not get according to our choice. That is Hari Ichcha or Hari Krupa. So you remain tranquil. This is how the life is. We have to accept it as it is. There is no choice. We have to accept it as it is. There is no choice. So when Rama has asked this question, Satta Matrena Sanstita, Mukte Sannita Khalu, what Vashishtha Rishi has to say now to this shloka number 16, that we'll see in the next meeting with these prayers. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Tatsat.
Sri Ramachandra Arpanamastu. Submitting the divine fruits to the holy feet of Sri Ram.